Unit 2, sorting materials into groups. Object around us. We all know that all objects are made of one or more materials. A given material could be used to make a large number of objects. For example, प्लास्टिक से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे बोटल्स, बकेट्स, बैग्स, etc. और कोई भी ऑब्जेक्ट मटेरियल के कॉम्बिनेशन से भी बनता है. जैसे कि एग्जांपल में देखें तो स्कूल बैग, ये क्लोथ से भी बन सकता है, प्लास्टिक से भी, मेटल से भी. अब अगर मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उसके सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेस पे इसके प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड किया जा सकता है. जैसे कि अपीयरेंस, पहला आता है अपीयरेंस. तो बहुत सारे मटेरियल्स जो होते हैं आप देखेंगे तो एक दूसरे से डिफरेंट दिखेगा. उसके पीछे का पहला जो चीज़ है वो है अपीयरेंस. कुछ मटेरियल्स क्या होते हैं, उसके शाइनिंग सरफेस होते हैं जिसको हम लोग लस्टर भी बोलते हैं. और मोस्टली मेटल्स जो होते हैं वो आयरन, एग्जांपल में देख ले तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, इन सब के जो सरफेसेस होते हैं वो जो होते हैं लस्टरस होते हैं, मतलब शाइनिंग होते हैं. जबकि अदर जो मोस्टली नॉन मेटल होते हैं वो दिखने में डल होते हैं. जैसे कि एग्जांपल में वुड और पेपर देख सकते हैं. ये हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि नॉन मेटल और मेटल के जो हैं प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. अब दूसरा है हार्डनेस. हार्डनेस, जब हम डिफरेंट मटेरियल्स को अपने हाथ में लेते हैं और उसको कंप्रेस करते हैं तो बहुत सारे क्या होते हैं वो कंप्रेस नहीं होते हैं, तो वो होते हैं हार्ड मटेरियल्स. जबकि बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इजीली कंप्रेस्ड हो जाते हैं. आप उसको स्क्रैच कर सकते हो, आप उसको मोल्ड कर सकते हो, तो उसको हम लोग सॉफ्ट मटेरियल बोलेंगे. अब जो आगे का प्रॉपर्टी है वो सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल. बहुत सारे सब्सटेंसेस जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं. तो जो सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं उसको सॉल्यूबल सब्सटेंसेस बोलेंगे, जैसे कि शुगर और सॉल्ट हो गया. जबकि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, उसको इनसॉल्यूबल सब्सटेंस बोलेंगे, जैसे कि सैंड हो गया, चॉक हो गया. बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो फ्लोटिंग नेचर के होते हैं और बहुत सारे जो होते हैं वो सिंक कर जाते हैं वाटर में. जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक बॉल हो गया, लीफ हो गया, थर्मोकॉल हो गया, ये सारे फ्लोटिंग मटेरियल्स में आएंगे. जबकि आयरन नेल, स्टोन कॉइन और सैंड इटिस जो है सिंकिंग मटेरियल्स में आ जाएंगे. ये मोस्टली डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी और वाटर का डेंसिटी का इसमें रोल होता है. तो वो हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी के लिए इतना ही है. उसके बाद ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो बहुत सारे मटेरियल में क्या होता है कि लाइट जो है, बहुत सारा मटेरियल्स जो होता है वो अलाउ करता है कि लाइट को पास करने के लिए कम्प्लीटली, उसको ट्रांसपेरेंट बोलेंगे. मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. जैसे कि हम लोग ग्लास में देख लें, वाटर में देख लें, ऐसे मटेरियल्स जिसमें हम लोग बिल्कुल नहीं देख सकते हैं उसको ओपैक बोलेंगे. जैसे वुड हो गया, मेटल, हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं. और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्लियरली तो नहीं देख सकते हैं बट कुछ कुछ देख सकते हैं, तो उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स बोलेंगे. जैसे कि ऑयल पेपर हो गया, कुछ प्लास्टिक्स हो गया. अब है कंडक्शन ऑफ हीट. तो वैसा मटेरियल जो कि हीट को पास करने देता है ईजिली, उसको कहेंगे कंडक्टर ऑफ हीट. अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट्स. जैसे कि हो गया आयरन, कॉपर, इसमें कंडक्शन ऑफ हीट ईजिली होता है. और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि हीट को पास करने नहीं देते हैं, उसको पुअर कंडक्टर बोलेंगे. जैसे कि एग्जांपल में हो गया वुड. इस चैप्टर में इतना ही था. आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में यूनिट 3 देखेंगे. Hi, today we are going to study separation of substances of class 6 NCERT Science. In this chapter we are going to discuss methods of separation. First is handpicking.
Sometimes when the unwanted things in a mixture are big and easy to see, we can simply pick them out using our hands. This is called hand picking. For example, when our mother cleans rice or wheat before cooking, she removes small stones or dirt by hand. Why it works? Because the unwanted items are big enough to be seen and picked. Now, second one is threshing. After harvesting crops like wheat or rice, the grain are stuck to the dry stem. Threshing is the method to separate the grains from the stalks. Farmer beats the dried plants or use machine to make the grains fall off. You can see it in these images. Winnowing. Third one is winnowing. Winnowing is used to separate something light from something heavy using wind or air. For example, grains and husks are thrown in the air, the heavy grains fall down straight, and the light husk is carried away by the wind. Why it works? Because wind can blow away lighter things, but heavier ones fall straight to the ground. Now we are going to discuss fourth method, that is sieving. When the parts of a mixture are of different sizes, we can use a tool with tiny holes called a sieve to separate them. For example, when wheat flour is sieved, uh, the fine flour passes through, but bigger things like husk or bran stay behind. Another example is at construction site, sieves are used to separate stones from sand. You can see in this image. Now we are going to discuss sedimentation and decantation. When we mix something heavy like sand in water and leave it undisturbed, the sand slowly settles at the bottom. This is called sedimentation. Then we gently pour out the clean water from the top without disturbing the sand. This is called decantation. For example, when sand is mixed in water, after some time the sand settles at the bottom and clean water stays on top. Why it works? Because heavier things settle down while lighter things like water stay on top. Now we are going to discuss sixth method, that is filtration. Filtration is used when we want to remove something that doesn't dissolve in water like tea leaves or mud. We pour the mixture through a filter cloth or paper. The liquid passes through and the solid stays on the filter. For example, when making tea, we use a strainer to remove tea leaves from the tea. Why it works? Because the holes in the filter let liquid pass but trap the solid parts. Seventh method, that is evaporation. Evaporation is the process where a liquid changes into vapor when we heat it. For example, salt is made from seawater. When the water is heated by the sun, it evaporates and salt is left behind. Why it works? Because the heat turns water into vapor, but salt doesn't evaporate. Eighth one is condensation. Condensation is the process where water vapor cools down and changes back into liquid water. For example, when we see water droplet on the outside of cold glass, it's because water vapor in the air has cooled and turned into liquid. Why it works? Because cooling makes gas turn into liquid. Now we are going to discuss about solution. A solution is made when we mix a substance into a liquid and it dissolves completely. For example, when we mix sugar or salt in water, they dissolve and form a solution. Because some substances can mix fully with water and disappear into it. Now we are going to discuss saturated solution. It is type of solution
Basically, solution has two types: saturated solution and unsaturated solution. But in this chapter, we will only discuss saturated solution. Solution. A solution is called saturated when no more of the substances can dissolve in the liquid. For example, if we keep adding salt to water, after a point it stops dissolving and settles at the bottom. That means the solution is saturated. Why it works? Because water can only dissolve a certain amount of substance. For today, that's it. We will meet on next chapter.